हाउ कैसा रहा बायो का एग्जाम? दिसंबर में यू हैड एग्जाम ना? तो हाउ वाज दैट? कैसा था? यस, हाउ वाज दैट? So now you can see on the back here on the screen, you can see some questions. So today we are going to take up some questions from counter current mechanism from excretory system. ठीक है? Everyone just take out your notebook and pen pencil. Everyone take out your notebook and pen pencil. What you need to do, you need to mark the correct answer. Like here you can see this is the first question. ठीक है? If you want, you can note down the question also. ठीक है? Note down the question you want. Otherwise, you note down the answer. Then I will tell you what is the correct answer of this. Okay, so we are going to revise this chapter again. We have already did this chapter. So everyone. So now first question is the primary purpose of the counter current mechanism in mammals is to increase GFR, yani glomerulus filtration rate, facilitate ultrafiltration, maintain medullary osmotic gradient, or D, enhance tubular secretion. So whatever your answer, note down in your notebook. Then I will tell you. You know, you don't need to discuss with anyone. ठीक है? किसी के साथ discuss करने की जरूरत नहीं है. I will tell the answer. And those who have done, just keep your hand like this. अपने desk पे अपना hand ऐसे रख देना. So that it will be easy for me to know that you have done or not. Okay, I'm getting side. I think I'm coming in between this. I hope now it is easy. Your video is now paused. Am I audible to you? So yes, is this question done? Question हो गया बेटा? सोच के करो क्योंकि you have done this chapter already in your class also and I have also taught you this chapter. ठीक है? तो 2 बार आपका ये chapter हो चुका है. And it's from your NCERT textbook only. कहीं बाहर से नहीं है. It's from your NCERT textbook. हो गया बेटा? Yes or no?
Because you are not responding well, I have to call by name then. Okay. I asked you many times, so you haven't left any option for me. So yes, Anmoldeep. Anmoldeep. Who is Anmoldeep? So yes, beta, what's the answer of this question? Voice is not coming. Okay, you are saying C option. So let's see, is it correct or not? So yes, it's correct. So answer is C. Ascending limb impermeable to water means पानी जो है ना आ सकता है ना जा सकता है इसमें. ठीक है. So let's see the explanation. So हमने जब ये किया था, मैंने डायग्राम शो किया था कि डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है. They both basically both work opposite to each other. ठीक है. So here you can see that is how they maintain the concentration of electrolytes in urine. ठीक है. So it is impermeable to water, but actively or passively transport NaCl means नमक, ठीक है, which is crucial for gradient formation. तो जो gradient होता है medulla और cortex में, it is due to this only. ठीक है. So moving to the next question. If vesa recta were absent, which of the following would be most directly affected? अगर vesa recta जो है वो ही नहीं हो, okay, it's just like a network. ठीक है. Different artery also निकल रहा है. So, ultrafiltration, tubular secretion, maintenance of medullary gradient or glomerular pressure. So, which is going to affect? I really like it. Some students are noting down the question. That's very important. These are the few questions that I have picked for you only. What the answer? Again? So, let's see. Yes. So, let's see the answer of this. Okay. So answer of this, yes, it's the maintenance of medullary gradient because vesa recta helps in maintaining counter current mechanism. So let's see. So it preserves the osmotic gradient by counter current exchange. So it works with the loop of Henle. Okay. So let's move to the next question. The osmolarity of the inner medulla reaches nearly 1200 milliosmolarity per liter. ठीक है. Mainly due to accumulation of what? किसकी वजह से इतनी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है? Is it glucose and amino acids, proteins and ions, NaCl and urea, or water and bicarbonate? So किसकी वजह से ये जो है हमने osmolarity, we know that it maintains the osmolarity, but how? So from the medical section, I would like to call here now
Inderveer Kaur. Inderveer Kaur, you take your time. Firstly, solve this and then come forward. And come with the explanation, beta. Yes. Inderveer Kaur, beta answer mila? Did you get the answer? C option. So you're saying it's C. So yes, it's correct. It's NaCl and urea. Okay. So how? So you can see NaCl कहाँ से आ रहा है? It is coming from ascending limb and urea is there. Last में जो हमारी collecting duct है वहां से majorly आता है. ठीक है. तो अगर कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है यूरिया कहाँ से रिसाइकल हो रहा है या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, इट इज मेनली थ्रू कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है. So moving to the next question. If NaCl transport from ascending limb is inhibited, अभी तक जो हमने पढ़ा, which immediate consequences expected? अगर NaCl जो हमारे जो ascending limb से निकल रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर वो रुक जाए तो क्या होगा? So options we have increased water reabsorption, loss of corticomedullary gradient, or increased urine volume with high osmolarity, or increased GFR. Yes, got the answer? Okay, let me call. Garima. Yes, Garima. Who is Garima? Stand up, beta. Yes, आजा. ये वहीं से बोल दो, अपनी सीट पे खड़े होके बोल दो. So what do you think? What is the correct answer of this question? Or you need time? Do you know the answer, beta? Yes, beta. Or you need time? Okay, okay. Take your time.
Yes, got the answer बेटा? Just think, NaCl करता क्या है? अभी तक हमने तो इसी पे क्वेश्चंस लिए. What is the role of NaCl? What it does? अभी इससे पिछले क्वेश्चन भी इसी पे रिलेटेड था, उससे पिछला भी. Who else can tell? Who else can tell from your class? Yes? किसी को आंसर आता है इसका? Let's see. It's B. क्योंकि बेटा ये ग्रेडियंट बना रहा था ना. It was involved where? It was involved in maintaining osmolarity gradient. अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन लिया है कि कौन बनाता है. It's urea and NaCl. So this question was linked with previous question. जो previous question था उसी से ये link है. ठीक है. तो लॉस ऑफ कॉर्टिको मेडुलरी ग्रेडियंट, जो उनके बीच में ग्रेडियंट बना है वो लॉस हो जाएगा, NaCl नहीं होगा तो. ठीक है. Now, which condition would directly impair the counter current mechanism? कौन सी कंडीशन जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म को एकदम से डायरेक्टली जो है इफेक्ट करेगी? इंक्रीज एडीएच मींस एंटी डायूरेटिक हार्मोन, रिड्यूस वैसा रेक्टा फ्लो, इंक्रीज जीएफआर और इंक्रीज एल्डोस्टेरोन. So I would call now Dhirvi is there. Dhirvi. So you are saying it's the option. So let's see. काउंटर करंट अगर मैकेनिज्म ज्यादा होगा, इट मींस हमारा जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा. सबसे पहली बात तो ये होगी. और इसमें जो चीज सबसे पहले इफेक्ट करेगी काउंटर करंट. क्यों? वाई वी आर कॉलिंग इट काउंटर करंट? Loop of Henle is going in downward direction. Let's take example. Vasorector will go in upward direction. So their movement, their flow, जो उसके अंदर जो fluid move कर रहा है, it's in counter. They are not moving in the same direction. They are not moving in this way. One is moving in this way, second is moving in this way. So that's why it is called counter current. So loop of Henle is not given, so we are left with Vasa recta. So that's why answer is reduced Vasa recta flow. Is it clear, beta? Okay. So now let's move ahead. Assertion we have. So assertion is saying filtrate becomes more concentrated as it moves down the descending limb of Henle's loop. Now reason is saying descending limb is permeable to water but impermeable to electrolytes. So let me call Dilpreet Singh. Yes, Dilpreet Singh आ जाओ. So yes, beta. Now what about assertion reason? Are they true or false? Assertion is true. Okay, reason के लिए मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, so you can see. अभी हमारा ऐसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वाज इन ऑन दिस ओनली. रीजन जो है उसी का कुछ उल्टा था. अगर आपने सेकंड क्वेश्चन देखा होगा ध्यान से तो इसी से रिलेटेड था. both are both are true. Are you confident? Or it was just a guess?
If I say it's wrong, if I say it's wrong, reason is wrong, can you correct me? No. Okay, you are not able to correct me. And you are saying it's true. Okay, so sit down. Although you are right, ठीक है, तुक्का लग गया है, so you can sit, ठीक है. So yes, filtrate becomes more concentrated because it's flowing down. तो वहां पे reabsorption हो रही है, ठीक है. जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो चल रहा है. So it's that's why it's become concentrated. Now reason is saying कि जब हमने ascending limb में पढ़ा, it is impermeable to water. तो इसका ऑपोजिट होता है डिसेंडिंग लिम्ब. इट इज परमिएबल टू वाटर बट इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. तो हमने इस पे जो है ऑपोजिट क्वेश्चन लिया था अभी असेंडिंग लिम्ब का, कि असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर. तो डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. सो दैट इज करेक्ट. So both the statements are correct. The answer is A. ठीक है. Now coming to second assertion reason. So for this I would like to call Paramveer Sharma. Paramveer Sharma? Yes, Paramveer Sharma. So assertion is ascending limb dilutes the filtrate. Reason: it actively transports NaCl into medullary interstitium while being impervious to water. आगे आगे बेटा, come forward. बस यहीं पर खड़े हो जाओ. So what do you think? Both are true. Both are true, huh? You are also saying both are true. So yes, both are true. Sit down. So yes, ascending limb dilutes the filtrate. ठीक है. क्यों डाइल्यूट कर रही है ascending limb? क्यों डाइल्यूट हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहा है. सिर्फ क्या रह गया? पानी अंदर रह गया, या फिर वी कैन से जो फ्लूइड है वो अंदर रह गया. इलेक्ट्रोलाइट्स आर मूविंग आउट फ्रॉम ascending limb. ठीक है. नमक जो है NaCl इज मूविंग आउट, सो इट्स बिकमिंग डाइल्यूट. कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो रहा, वो तो फिर आगे जाके फिर होएगा. So it actively transports NaCl into medullary interstitium while being impermeable to water. ठीक है. So that is its property, that what happens in ascending limb. So answer is A. ठीक है. So now let's move ahead. Match the following. So we have to match column 1 with column 2. ठीक है. So it's based on your NCERT का जो एक counter current mechanism वाला diagram है, based on that only. ठीक है. So descending limb. So descending limb में क्या होता है? What happens in descending limb? Okay, एक काम करते हैं, सभी बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा. Show me the fingers. Like for the one, if you are saying A जो है 1 के साथ है या 2 के साथ है, for 3 के साथ या 4 के साथ. Show me the fingers. ठीक है. So it will work well. So descending limb will go with which part? A means 1, 2, 3, 4. डिसेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? आई कैन सी. तो इट्स अ विक्ट्री साइन है ना? ओके, इट्स करेक्ट. ascending limb. ascending limb. ascending limb. yes. वैसा रेक्टा. वैसा रेक्टा. ओके. yes. collecting duct. so we are left with only one ना. so let's see. so A is the 2, B is the 1, and ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने ही है. so you can see. ठीक है. So collecting duct, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूरिया का जब बताया था, I told you कि it's from urea is from collecting duct only. And vasa recta is in gradient preservation, we can say osmolarity को preserve करता है. So nearly 99% of filtrate is reabsorbed mainly in DCT, Henle slough, PCT or collecting duct. So it's very easy question.
इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसमें यही एक इजी है, बाकी आई कैन अंडरस्टैंड थोड़े टफ था। Okay, for this question, I'm going to call Mandeep Kaur. Mandeep Kaur. Yes, beta, what's the correct answer? Which option? B. Henley's loop. सबसे सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन है, इट हैपेंस इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल। सारी ऑलमोस्ट ऑल ग्लूकोज, ऑल प्रोटीन्स रीअब्जॉर्ब देयर ओनली, वो आगे नहीं जाते। ठीक है, तो ये पीसीटी। ओके बेटा, सिट डाउन। So now urea contributes to medullary gradient through। अब ये क्वेश्चन हमने आई थिंक ट्वाइस ले लिया है ना। अब देखते हैं कि आप में से किस किस को याद है। यूरिया contributes to medullary gradient through। So let me call कुलविंदर सिंह। आ जाओ कुलविंदर सिंह। कुलविंदर इज एब्सेंट। ओके, देन महकदीप आ जाओ। महकदीप। सी ऑप्शन, रिसाइकलिंग फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। तो ये वाला हमने बहुत बार क्वेश्चन कर लिया है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया। ठीक है, so now let's move ahead। Which nephron part selectively secretes proton and potassium ion? PCT, Henle's loop, DCT और glomerular। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन नीट ओनली। एनसीईआरटी सही है, बट इट्स ऑफ द लेवल ऑफ नीट। तो एक बार देखो, देन आई वुड लाइक टू कॉल हियर हरजोत कौर। इसके बाद जिसको आंसर देने हरजोत कौर आएंगे। Which option? C. So let's see. Is it C? So yes, it's C। डीसीटी का जब हमने एक डायग्राम ऐसे वाला जो बनाया, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि प्रोटोन एंड दिस पोटेशियम इज मूविंग आउट। ठीक है, सो दैट्स राइट। सिट डाउन बेटा। तो इसमें तो आंसर गलती से पहले ही आ गया। हाँ, so leave this question। Now this is a case-based question। A 19-year-old student is trekking in a hot, dry region with limited water intake. After 24 hours, his urine volume decreases significantly and becomes highly concentrated। ठीक है, कोई बच्चा है 19 साल का, वो ट्रैकिंग पे गया है, ऐसी जगह गया है जहां पर बहुत गर्मी है, ड्राई एरिया है, और उसने पानी भी कम पिया है। तो आफ्टर 24 आवर्स उसका यूरिन का वॉल्यूम कम हो गया और वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। So now first question. So which nephron mechanism is primarily responsible for concentrating his urine? Show me the finger। चलो अब फिंगर वाला देखते हैं। Show me the finger। A B C D। A B C D। So everyone is showing the victory sign। So let's see। Yes, counter current mechanism। ठीक है, so moving to the next question। Which hormone is most likely to be released in higher amounts under this condition? जो उसको हुआ है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन उसका बन रहा है, तो कौन सा हार्मोन जो है वो यहाँ पर अभी आपका जो है रिलीज होगा? इज इट एल्डोस्टेरोन, रेनिन, एडीएच और एएनएफ? सो अगेन ए, मुझे फिंगर शो कर दो ऐसे, कौन सा है? यू कैन थिंक एंड आई कैन आंसर।
ये से ये तो सोचने वाला नहीं है, सोच के बताओ जल्दी। ए बी सी डी। ये चार तो हार्मोन्स है इन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज विद दीज। हाँ, तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल हेयर और रिलीज्ड हेयर? Is it difficult? Yes. Okay. So let's see the answer then. It's T. Antidiuretic hormone. Which part of nephron shows maximum water reabsorption due to this hormone? अब ये जो ADH रिलीज हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से जो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर? इज इट PCT, ascending limb of Henle, or distal convoluted tubule and collecting duct, or Bowman's capsule? Show me the finger, बेटा। इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि हम केस स्टडी कर रहे हैं ना, वो जो था अभी पढ़ा हमने उसी से रिलेटेड है। उस बच्चे का पहले की कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन क्यों हुआ? काउंटर करंट मैकेनिज्म। कौन सा हार्मोन निकला? दैट इज ADH। नाउ ADH इज अफेक्टिंग विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? दैट इज बीइंग आस्क्ड हियर। कौन सा पार्ट जो है जिसमें वो वर्क करेगा ताकि जो है वाटर रीएब्सॉर्ब हो, बॉडी से बाहर ना जाए? यस। ADH किस पे वर्क करता है? ADH work on which we can say part of the nephron? ऐसे whispering me. Show me the finger. Like for the A1, for the B2, for the C3, and for the D4. If you know the answer. But you now you should know and you should remember everything because you have exam in February, है ना? एक महीना भी नहीं रह गया। तो इट्स वेरी सिंपल। इट्स सी, दो चीजों पे होता है। डिस्टल जो भी हमारा यहाँ से जो पार्ट शुरू होता है एंड देन दिस ट्री लाइक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डग, उस पे ADH वर्क करता है। तो इट्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डग, यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कैन हैपन। ठीक है। Now next, in an experiment, NaCl transport from the ascending limb of Henle's loop is blocked. अब ऐसा हमने कुछ एक MCQ भी लिया था, ठीक है। NaCl का ट्रांसपोर्ट ascending limb से ब्लॉक हो गया है। So let's take some question. Which immediate change is expected in the filtrate? तो filtrate जो है उसमें क्या चीज सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड होगी अगर NaCl का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाए? Is it increased concentration, no change, reduced dilution, or increased glucose content? थोड़ा सोचो। ascending limb है, that is permeable to the electrolytes, means NaCl. Now electrolyte is not moving out of ascending limb, so what is going to happen in that case? क्या होगा? रिड्यूस डाइल्यूशन। अगर इसी को हम ऑपोजिट कर दें तो क्या होगा? ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस डाइल्यूशन मीन कैसे रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि NaCl इज नॉट मूविंग आउट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, तो डाइल्यूशन नहीं हो पा रही। पानी तो वैसे ही बाहर नहीं जा सकता, ना अंदर आ सकता है। जो एक चीज जा सकती थी वो भी नहीं जा रही, so it's not diluted.
Now, based on this, next question. Which long-term effect will this blockage cause? अगर ये चीज काफी टाइम तक रही तो क्या होगा? What is going to happen? Increased urine osmolarity, loss of counter current mechanism, or increased GFR or increased tubular secretion. Yes. क्या होगा अगर ये चीज काफी देर तक सालों तक रही? लॉस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो जो इफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि NaCl और यूरिया की वजह से ही जो है मेनली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है बनता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होती है। ठीक है, सो काउंटर करंट मैकेनिज्म पे आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए। आई होप नाउ इट इज प्रीटी क्लियर टू यू। यस, थोड़ा सा रिकॉल हुआ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, so now with this we are ending our session beta. ठीक है, so bye everyone.